Hello everyone, welcome to the top 50 MCQ session on EduTap, in which we will be discussing the top 50 MCQs from the month of December 2022, and these are relevant for all RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. So guys, when I talk about this session, this is a revision session of the fast track sessions that you have covered in the past 1 week, and this is a revision session and that's why it is going to be a rapid fire one. So all of you are requested to comment your answers to all the 50 questions in the comment section. So before starting with this particular session guys, there is a small announcement for all of you that we at EduTap are launching the comprehensive guidebook for the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A officers. And guys, these guidebooks are going to provide you the definitive answers to the common queries that pops up in your mind. It can be about the exam organization as well as the preparation of the exam. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so the queries can be about the Reserve Bank of India, like what is exactly the developmental role of RBI in Indian economy. It can be about, the question can be about the exam itself, like what is the eligibility criteria, what are the different age relaxations, what is the pattern of the exam, what is the detailed syllabus of the exam. So everything is being provided to you in this comprehensive guidebook. Apart from that, when I talk about the preparation, the question can be about how to prepare for this exam, what are the different sources that I must follow to clear this exam. So definitive answers to all such queries will be provided to you in this one-stop comprehensive guidebook that we are providing to you. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks, the link to which is given in the description below. So now let's move back to our session. So guys, today's session we are going to cover 50 MCQs and you are required to calculate your scores and you are required to comment your scores at the end of the session. So guys, let's begin the session with the very first question, which is here on your screen. So the first question is, you are required to tell me the name of the city which has recently announced to launch a municipal corporation. See, it has basically announced to launch a 10-year municipal bond sale for the purpose of setting up a solar plant. So let me give you a small hint about this question, that when I talk about the city that is the answer, this city was being awarded the India's Cleanest City Award for consecutive 6 years. So what is the name of that? I think now it would be easier for you to answer this question. That is option B, Indore. So guys, Indore is the right answer to this question. Let's move to the next question. In the next question, you are required to tell me the MMR. See guys, as per the special bulletin on MMR released by the Registrar General of India, India's maternal mortality ratio has declined to dash per lakh live births in 2018-2020. So as per the recent data, basically you are required to tell me that what is exactly the maternal mortality ratio in India for year 2018 to 2020. And here guys, the right answer is option B, that is 97. So with the help of this graph, you can easily see that there is an incremental reduction in the MMR of India that India has achieved. For example, in 2014 to 16, it was 130 and now this value has decreased to 97 in year 2018 to 2020. And let me tell you that after achieving the MMR of less than 100, now India has basically achieved the national health policy target of achieving the MMR of less than 100. And now we can also say that India is on a right track to achieve the SDG target of achieving the MMR of less than 70 by year 2030. And now guys, when I talk about achieving the sustainable development goals target by year 2030, so presently the number of states has also increased from 6 to 8 who have already achieved this target of less than 70. And when I talk about the state which is leading this particular list, it is basically Kerala. So I hope that all these kind of details are very much clear to all of you. And whenever you are covering any kind of news article, that's how you are really required to analyze yourself, that whether you know all the aspects of that news article or not. Let's move on to the next question. So the next question is, you are required to tell me the name of the country. Okay, just so basically when I talk about the question, so Kochi based solar electric boat manufacturer NABARD Solar and the electric boats has received its first export order. और आपको ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री से ये ऑर्डर उनको मिला है. Is it Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Maldives and Myanmar? So guys, here when I talk about the right answer, let me give you one more hint that the right answer is basically the country whose capital is Male. So guys, I think now it is very easy for you to answer the question, that is option D, that is Maldives. So guys, that's how whenever you see any foreign country in the news, always try to remember that what is exactly the currency, the capital of that country. Apart from that, you can also remember the prime minister, president or the chancellor. For example, when I talk about the Germany, so Germany is having the chancellor. What is the name of that? We are going to tell you that in the upcoming slides of the session.
Let's move on to the next question. So अगला question आपकी screen पर, and here you are required to tell me the name of the place which should be added to a list of endangered World Heritage Sites as per the UNESCO task report which was released recently. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि इनमें से वो एक जगह है जिसको ऐड कर देना चाहिए टू द लिस्ट ऑफ इंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. एंड व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस? लेट मी टेल यू अ हिंट दैट इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन अर्थ. So now I think that is very much clear to all of you, and let me give you one more hint that it is basically situated along the Queensland coast of Australia. So here guys, absolutely right, it is the right answer is Great Barrier Reef is the right answer to this question. So that is the right answer. Let's move on to the next question. Next question is very easy question and a halwa question for all of you. That is, recently वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि मॉन्की पॉक्स का नाम हम अब चेंज कर रहे हैं. सो व्हाट इज दैट न्यू नेम फॉर द मॉन्की पॉक्स? सो देयर वर डिफरेंट रीजन दैट आर आउट ऑफ आवर स्कोप ऑफ द सिलेबस, बट यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट व्हाट एग्जैक्टली द न्यू नेम ऑफ मॉन्की पॉक्स, एंड दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज एम पॉक्स. तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूज, सो हु इज बेसिकली प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज डॉक्टर टेड्रोस. So यहाँ पर मैं आपको बता दूं guys, whenever you find such kind of international organization in the news, always remember कि उनके चीफ कौन है, head of the organization कौन है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए. Apart from that, you must also remember that where is the headquarter of this particular organization. For example, when I talk about the World Health Organization, the headquarter of World Health Organization is in Geneva, Switzerland. So that is the right answer. I hope this is clear to you. Let's move on to the next question. Now the next question is, India ने recently extend किया है financial assistance of worth USD 100 million. तो आपको बताना है कि वो कौन सी country है जिसको यहाँ पर recently, in order to support that country in its difficult economic situation, government of India has extended this financial assistance. What basically here guys, there are two important things. First one is the amount, that is USD 100 million, that has been extended as a part of the financial assistance to that country, and the name of that country is option D, that is Maldives. So Maldives is the right answer. Let's move on to the next question. Next question is, SEBI has hiked debt funds limit to what percentage? So basically you are required to tell me the percentage by which this debt funds limit has been hiked by the Securities Exchange Board of India in the single issuer securities to protect the interest of investors in securities and to promote the development of the market. So you are just required to tell me that what exactly that percent is जिसका यहाँ पर debt fund limit को increase किया गया है, and here guys the right answer is option A, that is 12%. So this particular limit has been increased from 10% to 12%. You must remember both the values, that is 10% as well as the 12%. So guys, now let's move on to the next question. So here Open Financial Technologies has partnered with SBM Bank to launch Asia's first into an embedded finance platform. See guys, what makes this question important? These two words are making this important, that is, this is the first time in Asia that such kind of platform has been launched, and the name of that particular platform is option B, that is Switch. सो ऐसे रिसेंटली जो भी प्लेटफॉर्म्स है और ऐसा कुछ भी एक्टिविटी या कोई भी अचीवमेंट या फीट ऐसी फर्स्ट टाइम होती है, सो यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस, जिन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है, दोनों ने एग्री किया है दैट दे विल बी मर्जिंग एयर इंडिया with which of the following airlines. Basically you are required to identify the name of the airline जिसके साथ Air India को merge करने वाले हैं, and the right answer is Vistara. So guys, see, these kind of questions are very direct in nature, and that's why they do not require much of the discussion here, and that's why I'm just telling you the answers and I'm moving on to the next question. So the questions जहां पर आपके लिए discussion जरूरी होगी, I am definitely going to discuss that in a detailed manner like we have done for द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वाला क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि कौन सी कंट्री की वो स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम इन ऑर्डर टू प्रोपेल इट्स स्पेसक्राफ्ट दैट वाज लॉन्च्ड एज वन ऑफ द पेलोड्स अबॉर्ड द ओरियन स्पेसक्राफ्ट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन ई, दैट इज जापान JAXA. So that is the right answer. Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, and you are required to tell me the name of the organization which has launched the report, जिसका टाइटल आपके सामने दिया गया है, that is the review of maritime transport for 2022. So guys, यहाँ पर मैं आपको बता दूं that these are the kind of things that are really very important to be covered. Whenever there is a report comes in the front of you, what you are required to do, you are required to cover that report across 5 dimensions. The first dimension is the releasing body.
और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी रिलीजिंग बॉडी के ऊपर ही पूछा गया है. सेकंड थिंग इज द फ्रेमवर्क ऑफ द रिपोर्ट और अबाउट द रिपोर्ट. द थर्ड वन इज important rankings if there are in that particular report. Fourth one is the important findings, and fifth one is the recommendation. So recommendation part is the one which is really going to help you while answering the descriptive questions in the exam. Okay, so when I talk about the name of the organization which has released this review of maritime transport for 2022, the name of that organization is UNCTAD. ठीक है, और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपके लिए यहाँ पर मेंशन की गई है दैट द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड ग्रोथ एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनसीटीएडी, it is going to moderate to 1.4% in year 2022. That is what you are really required to remember. But there is one more thing that you must remember, that is UNCTAD का headquarter कहाँ पर है. So it is basically in Geneva, Switzerland. So these are the things that you must remember from the exam point of view. Moving on to the next question. So India is going to assume the chairmanship of Wassenaar arrangement on 1st January 2023. तो Wassenaar arrangement is in the news and you are required to tell me कि India ने Wassenaar arrangement को कौन से ईयर के अंदर साइन किया था. So basically इंडिया कौन से ईयर में उसका मेंबर बना था, that is what you are required to tell me. When I talk about the Wassenaar arrangement now, it is a multilateral technology control agreement which जिसका प्राइमरी गोल है टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू द टेररिस्ट आउटफिट्स. बेसिकली टेररिस्ट आउटफिट्स तक आपकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज की इंफॉर्मेशन ना जाए उसके लिए ये काम करता है. ठीक है, इट केम इनटू प्लेस इन 1996 and it has presently 42 members. When I talk about the 42nd member na, it was India only. And India became the member of the Wassenaar arrangement in year 2017. That is the right answer to this question. And when I talk about, see, as we have discussed कि India chairmanship लेगा on 1st January 2023. So what is the name of that country जिसके पास ये chairmanship at present है? That is basically Ireland. So guys, that's how you're really required to remember that what exactly are the different details about that news article that you must remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. ऑन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू सपोर्ट डैश इन इंडिया. तो वन ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ये यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं with the amount of USD $16 million. So guys, quickly tell me what is the right answer. Is it sugarcane farming, chili farming, potato farming, oil palm farming and fish farming? So guys, all the people who are basically preparing for the NABARD grade exam, guys, this question is very important for you. And here when I talk about the right answer, it is fish farming. तो fish farming को support करने के लिए यहाँ पर ADB ने Abyss Exports India Private Limited के साथ ये MOU साइन किया है. तो when I see the Asian Development Bank, as I told you that you must ask yourself कि क्या क्या questions यहाँ से आ सकते हैं. That is first of all headquarter कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है. उसके president का नाम क्या है? It is Masatsugu Asakawa. So these are the details that you must remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. Which of the following companies has become the first firm to file a confidential DRHP with SEBI for IPO? IPO means initial public offering. तो यहाँ पर वो कौन सी कंपनी है जिसने की जो पहली फर्म बनी है इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल DRHP को यहाँ पर फाइल करने के लिए. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज टाटा प्ले. टाटा प्ले जिसको कि हम टाटा स्काई के नाम से जानते थे पहले, दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू कैन गो through that on your own. Let's move on to the next question. So which of the following banks has launched the foreign currency loan against INR deposits at its gift city branch? तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने की लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट इन rupees deposits. And here guys the right answer is option B, that is Bank of Baroda. So it has become the first bank to offer this facility at the gift city. So it has become the very first bank to launch this particular facility. Let's move on to the next question. अगला question है आपका डिफेंस एक्सरसाइजेस से. The name of the exercise which is in the news is Agni Warrior 2022. So whenever you just find such kind of news article, guys, on the defense exercise, what you are required to remember, I always tell you that first of all you must remember the name of the exercise. Second thing is the parties involved, that is कौन कौन सी countries हैं जो उसके अंदर participate कर रही हैं. So one of the countries is India. What is the name of the other country? That is what you are required to tell me. And the another question जिसके ऊपर question आता है एग्जाम के अंदर, that is V for venue. तो venue की अगर हम बात करें, it was held in Maharashtra. So now when I talk about the right answer to this question, that what is the name of that country which has participated along with India in this exercise, the name of the exercise is Agni Warrior, which held in Maharashtra is option E, that is Singapore. So Singapore is the right answer. Let's move on to the next question. तो अगला question आपकी screen पर, the question is very simple in its terms. It's basically asking you that what is the aim of Digi Yatra. See, here you can see that
it has been related to the current development and it can also happen in the exam कि current development में यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा initiative आएगा government का, and it can also ask you that what are the a static part of that particular initiative. For example, here it is Digi Yatra. तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है डिजी यात्रा को 3 एयरपोर्ट्स के लिए। तो डिजी यात्रा का एम क्या है? द एम इज बेसिकली टू प्रोसेस द पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स बेस्ड ऑन द facial recognition technology. That is what is the aim of launching this Digi Yatra is, and that is why option A is the right answer. Now the next question, you are required to tell me the name of the state जिसने लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली दे आर गोइंग टू प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर इन आवर कंट्री, एंड ऑल्सो the aim of it is also to keep the younger generation healthy and to provide platforms to the sports persons. And guys, under this particular part, that particular state is going to identify one sport for each of the 75 districts which are present in that particular state. And now I think the things will become easier for all of you to answer this question. The right answer is option D, that is Uttar Pradesh. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएस ने यहाँ पर कितने साल का कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिया है फ्रॉम द रेल डिलीवरी ग्रुप to design, develop and implement and operate the UK's rail data marketplace. So quickly tell me what is the right answer. What is that tenure for which TCS has backed that particular contract? And it is option D, that is 6 years. Next question, as per the National Statistical Office data, India की जो economic growth है वो slow down हो गई in the Q2 of the fiscal year 23. See guys, as we are right now talking about the Q2 of the fiscal year 2023, but let me tell you here that for the exam you are required to always remember the annual data, ठीक है? But अगर उस time पर exam से just पहले ऐसा कोई data आता है for that particular quarter, that is also must be required to be covered from the exam point of view, because it can also be asked in the exam. So when I talk about the right answer, it is option C, that is 6.3%. Now the next question, तो जर्मनी ने अनाउंस किया है 1 billion euro for energy transition projects in India. A very important point, नेम ऑफ द कंट्री जर्मनी जिसने अनाउंस किया है 1 बिलियन यूरो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना परसेंट ग्रांट रहेगा और कितना परसेंट रहेगा लाइन ऑफ क्रेडिट। सो गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगर मैं बात करूं उसके चांसलर की, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट what is the name of the highest authority of in that particular country. So when I talk about the Germany, it is the chancellor, that is Olaf Scholz. So guys, these are the details that you must remember from the exam point of view. Now when I talk about the right answer to this question, it is option D, that is 10% of the grant and 90% will be in the form of line of credit. That is the right answer. Now the next question. So अगले question है एक और report के ऊपर, that is climate investment opportunities in India's cooling sector. As per the report, over 160 to 200 million Indians could be exposed to lethal heat waves. और आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है. It is a very direct question. You are just required to see the title of the report and you are just required to identify the name of the organization which has released it. That is option B, that is World Bank. तो यहाँ पर कुछ important details हैं, findings दी गई हैं रिपोर्ट की कि 34 million Indians are going to face job losses due to the heat stress related productivity decline, and by 2037 जो demand है cooling, it is likely to be 8 times more than the current level. So these are the things that you must remember from the exam point of view. Moving on to the next question, which is once again a very important report from the World Bank, that is Migration and Development Brief by the World Bank. And as per the report, India is set to receive over record remittances in 2022. So what is exactly that amount of remittances? See guys, always this is once again one of the parameters जहाँ पर India is always on the top. So यहाँ पर when I talk about the amount of the remittances that India is going to receive in 2022, it is option D, that is $100 billion. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि that these India's remittances will grow 12% from 7.5% of the last year. See, last year it was 89.4% and now it will be $100 billion. तो यहाँ पर जब मैं पढ़ता हूँ वर्ल्ड बैंक को तो क्या क्या क्वेश्चंस मेरे माइंड के अंदर आते हैं. That is, where is the headquarter of the World Bank? That is in Washington DC. ठीक है जी. Second question is that जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1944 में during the Bretton Woods conference. Apart from that, one more question comes in my mind, that who is presently serving as the president of the World Bank? That is David Malpass.
pass. So guys, these are the kind of question that you must remember from the exam point of view. Next question. So here you are required to tell me the name of the country. See, India ने एक agreement sign किया है for the Economic Development Cooperation Fund loan of around 1500 करोड़, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री के साथ इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया है टू establish intelligent transport system on the Nagpur Mumbai super communication expressway. And here guys, the right answer is option A, that is South Korea. A very direct question guys, that's why we are just telling you the right answer and we are moving on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, that is on the important international days. तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी 2022, ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर देर इज अ न्यूज ऑन द इंटरनेशनल डेज, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. सी, ये इंपॉर्टेंट डेज है. इंटरनेशनल डेज की कैटेगरी के अंदर दो चीजें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है. वन इज अ डेट and the second one is the theme of that particular day. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डेट की, it is being celebrated on none of the above. See guys, in the exam you are going to see a lot of times that there is one more option, that is none of the above, but very rarely that there is a answer that will be none of the above. क्यों? क्योंकि they are basically intentionally hiding the answer from you. So that's why you must know the answer, and if you know it, then only you can mark the right answer. So when I talk about the International Day of Person with Disabilities, it is basically being celebrated on 3rd of December every year. That is being not given in the option. That is why the right answer is option B, that is none of the above. So guys, जब हम बात करते हैं थीम की, तो थीम भी आपके यहाँ पे सामने मेंशन है. You can go through it. Now let us move on to the next question. अगला question is very on the direct lines. That is the first Silchar Sillet Festival 2022, जो कि सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया बांग्लादेश के टाइज को सेलिब्रेट किया गया है. बट आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन पे इसको सेलिब्रेट किया गया है. दैट लोकेशन इज बराक वैली. दैट इज द राइट आंसर. और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया फाउंडेशन ने, जो कि काम करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इन्होंने मिलकर किया है बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द 17th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंडियन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर ये रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको बताना है कि ये कौन सी जगह पर हुई है. वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड हलवा क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. एंड गाइस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज रबर्ट, मोरक्को इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, दैट इज एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडेक्स 2022, और आपको बताना है कि इंडिया की रैंक इसके अंदर क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हेनेवर सच काइंड ऑफ इंडेक्स कम्स, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, दैट इज द रिलीजिंग बॉडी. रिलीजिंग बॉडी कौन है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडियाज रैंक, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 48. बट यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी वो कंट्री है जो कि टॉप पर थी. दैट इज सिंगापुर वाज एट द टॉप, फॉलोड बाय यूएई एंड साउथ कोरिया ऑन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द चाइना, इट वाज at the 49th place. Now guys, moving on to the next question. National Institute for Health and Care Research UK, इसने recently एक ग्रांट यहाँ पर दी है टू पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर. बेसिकली इस ग्रांट का एम क्या है? दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म रिसर्च इन इंडिया एंड नेपाल. तो गाइस मुझे बताइए जल्दी जल्दी, व्हाट इज द that particular amount that has been given by the National Institute for Health and Care Research, which is of the United Kingdom. And here the right answer is 10 million euros. Next question. So senior nuclear scientist KV Suresh Kumar has recently appointed as a new CMD of Bhavini. What does Bhavini stands for? It stands for भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो करंट डेवलपमेंट है कि केवी सुरेश कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है. बट आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो भाविनी है ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है. सो ऑन सच काइंड ऑफ लाइंस एज वेल द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट बी रेडी टू अटैक ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आपको अटैक करना है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी ऑन द इजियर लाइंस. तो यहाँ पर जब हम बात करें भाविनी की, भाविनी इज बेसिकली लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूएसए ने रिसेंटली अनवील किया है 6th जनरेशन न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर, और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि उसमें से इनमें से कौन सी वो कंपनी है जिसने उसको बिल्ड किया है. सो बेसिकली यूएस ने इसको अनवील किया है. व्हाट इज दैट? इट इज अ 6th जनरेशन न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर. नाम क्या है उसका? B-21 रेडर. जब हम बात करें कंपनी की जिसने उसको बिल्ड किया है, गाइस द राइट आंसर इज नॉर्थरॉप ग्रमन कॉर्पोरेशन. दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली डेवलप किया है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट
जो कि एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है. व्हाट एग्जैक्टली इट डू? इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स. सी वेव्स की हेल्प से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. इसका एक नाम है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, बट व्हाट इज द अनदर नेम फॉर दैट? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. एंड हियर गाइस द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सिंधुजा 1. So Sindhuja 1 is the right answer. उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है. यू कैन गो थ्रू दैट ऑन योर ओन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following has become the first state to set up the separate Divyang department? Guys, a very important question from the part of the social justice. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि what exactly is making this question important, that is this, the first state. तो first state वो कौन सी है जो कि बनी है to set up separate Divyang departments, and here guys the right answer is option E, that is Maharashtra. So Maharashtra is the first state. Let's move on to the next question. So India का पहला gold ATM यहाँ पर कौन सा बना है? See guys, this is the ATM from which you can just withdraw the gold coins, and all these gold coins will be 24 karat gold. तो यहाँ पर वो कौन सी प्लेस है इसको इसको लॉन्च किया गया है जिस प्लेस पर? दैट इज ऑप्शन ए, हैदराबाद. हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, एंड दिस हैदराबाद बेस्ड गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन सेट अप a gold ATM. Now the next question, which of the following companies has decided to invest 9500 crore for setting up lithium ion battery gigafactory in Mahbubnagar district of Telangana? तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने कि यहाँ पर कहा है कि we are going to invest 9500 crores for setting up lithium ion battery gigafactory, and here guys the right answer is Amar Raj Batteries Limited. So this is the right answer. Now the next question, आपको यहाँ पर बताना है, you are required to tell me the name of the person who has recently won the ISSF President's Cup 2022 in Cairo. So what is the right answer to this question? What is the name of that person who has recently won the ISSF President's Cup 2022? And here guys the right answer is Rudraksh Patil. So Rudraksh Patil is the right answer. Now the next question, and guys now the next question is on the World Soil Day 2022. तो वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 5th ऑफ दिसंबर पे, आपको बताना है कि उसकी थीम क्या है. सो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2022. द डेट इज 5th ऑफ दिसंबर 2022 जब इसको सेलिब्रेट किया गया था, बट व्हाट इज द थीम? द थीम इज बेसिकली सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस. दैट्स व्हाई गाइस आई ऑलवेज टेल यू दैट whenever there is a question on the important days, you are required to remember what? First thing, that is the date on which we celebrate that day. Second thing is the theme, and sometimes there is also a host country for the celebration of that particular day. In the rare cases that particular thing is going to take place, but for that as well you are required to be prepared. Okay, now the next question. Now the next question is on the National Conclave on Soil Health Management for Sustainable Farming 2022, जिसको once again it was being held on the World Soil Day. आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इसको ऑर्गेनाइज किया था. It was Niti Aayog, German Agency for International Cooperation, IISc Bhopal. What is the right answer? So guys, here when I talk about the right answer, it is basically option D, that is both Niti Aayog and German Agency for International Cooperation. That is the right answer to this question. Now the next question, India has signed a migration and mobility agreement during the visit of Foreign Affairs Minister of which of the following countries for easier access to study, research and work? तो यहाँ पर रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर आए थे. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गिवन हियर, दैट इज एनालिना बैब्रॉक. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन आए थे इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज अ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत यहाँ पर जो लोग हैं उनको मिलेगा इजियर एक्सेस टू स्टडी, रिसर्च एंड वर्क. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? इट इज बेसिकली ऑप्शन सी, दैट इज जर्मनी. और जर्मनी के अगर हम चांसलर की बात करें, इट इज ओलाफ शोल्स, एंड द कैपिटल ऑफ द जर्मनी इज बर्लिन. सो गाइस, दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि है रिलेटेड टू ईपीएफओ. तो ईपीएफओ ने अपना डेटा रिसेंटली रिलीज किया एंड इट शोज व्हाट परसेंटेज जंप इन द फॉर्मल जॉब क्रिएशन. तो यहां पर क्वेश्चन है कि जो फिस्कल ईयर 2023 है उसके फर्स्ट हाफ में वो कौन सी बेसिकली हमारी जो फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो कितना परसेंट यहां पर जंप मिला है इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉर्मल जॉब्स. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 35%. जब हम बात करते हैं उन स्टेट्स की जहां पर सबसे ज्यादा ये फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई हैं, इट इज महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु, व्हिच हैव क्रिएटेड द मोस्ट फॉर्मल जॉब्स इन आवर कंट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2023. So I hope that this is clear to all of you. Then let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शी स्टैम्प 2022 has been held as a part of डैश इंडिया नोबल मेमोरियल वीक 2022. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर कंट्री का और इंडिया का नोबल मेमोरियल वीक 2022 रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, और यहां पर उसके पार्ट के टाइम पे
आप देख सकते हो कि ये जो नोबेल मेमोरियल वीक 2022 है, उसके अंडर शी स्टेम 2022, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो वो वुमेन्स जो कि इससे एसोसिएटेड है उसको सेलिब्रेट किया गया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट. सो हियर गाइस द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्वीडन. तो स्वीडन इंडिया नोबेल मेमोरियल वीक 2022 रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइनेंसिंग फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन, it needs to be doubled to deal with the global crisis of the climate change, biodiversity loss and land degradation. और आपको सामने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ऑन द रिलीजिंग बॉडी कि ये जो रिपोर्ट है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है. इज इट यूएनईपी, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव ऑफ जर्मनी, इज इट यूएनसीसीडी, यूरोपियन कमीशन, और ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव. See guys, I always tell you that the very first thing when a report comes in front of you, you are required to do, you are just required to remember that what is the name of the body which has released this report. And when I talk about this particular report has been released by all these particular organizations जिनका नाम यहाँ पर mentioned है. ठीक है, so that is the right answer. Let's move on to the next question, and the अगला question is on the WHO report जो कि recently release की गई थी, and you are required to tell me that which of the following is the second leading cause of death among the children aged 5 to 14. तो यहां पर आपको कुछ यहां पर दिए गए हैं रीजंस फॉर द चिल्ड्रंस डेथ, और आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा रीजन है दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द चिल्ड्रन. इज इट कैंसर, डायरियल डिजीज, ड्राउनिंग, रोड ट्रैफिक इंजरीज और बर्न्स? एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रोड ट्रैफिक इंजरीज. दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पर आपको बताना है कि रेजर पे ने एनेबल किया है मर्चेंट्स को टू एक्सेप्ट द क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन यूपीआई. अब ये जो इन्होंने यहां पर एनेबल किया है चीजों को, ये कौन सी बैंक के साथ पार्टनरशिप में किया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज एक्सिस बैंक. तो एक्सिस बैंक के साथ रेजर पे ने पार्टनरशिप की है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी व्हिच हैज पार्टनर्ड विद द मेटा for extending the Facebook parents subsea cable infrastructure to India and integrate WhatsApp as a communication platform as a service. तो आपको बताने की वो कौन सी कंपनी है जिसने कि मेटा के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चीज के ऊपर यहाँ पर अग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप किया है. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एयरटेल इज द नेम ऑफ द कंट्री which has partnered with Meta for this. Moving on to the next question. So now the next question is here a very important question guys. This question is on the important personalities. तो पर्सनालिटी न्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज इंडियन ओरिजिन टीचर वीना नायर जिनको कि रिसेंटली दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज, बट कौन सी कंट्री के अंदर मिला है उनको, ये बेसिकली क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां पर नेम ऑफ द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन ओरिजिन टीचर है, नाम है वीना नायर, नाम तो सुना होगा. और यहां पर हम आपको बता दें कि जब 2022 का प्राइम मिनिस्टर प्राइज कौन सी कंट्री के अंदर दिया गया है, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और यहां पर मैं आपको बता दूं द क्वेश्चन इज ऑन द वर्ड ऑफ द ईयर गाइस. अ वेरी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2022 क्या है, ये आपको मुझे बताना है. ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन मैं आपके लिए एलिमिनेट कर देता हूं, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज गैस लाइटिंग. तो गैस लाइटिंग अगर मैं बता दूं, इट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ऑफ द डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर. तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है gas lighting. So what is the right answer to the Oxford Dictionary word of the year? It is option D, that is goblin mode. That is the right answer to this question. Let's move on to the next question. अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्वयं शिक्षण प्रयोग महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अवार्ड दिया गया है लोकल एडेप्टेशन चैंपियंस अवार्ड. सो दे हैव बीन अवार्डेड फॉर देयर वर्क इन सपोर्टिंग डैश. तो आपको बताना है कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया था जिसके लिए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज स्वयं शिक्षण प्रयोग, एज द नेम सजेस्ट. सो गाइस हियर द राइट आंसर इज वुमेन फार्मर्स. तो वुमेन फार्मर्स को यहां पर सपोर्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लोकल एडेप्टेशन चैंपियंस अवार्ड से नवाजा गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया इज ऑफिशियली विड्रॉन इट्स बिड टू होस्ट द एएफसी एशियन कप 2027. और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा विड्रॉ किया गया है इंडिया ने इस बिड से एएफसी एशियन कप से, तो गाइज यहां पर एएफसी एशियन कप कौन से स्पोर्ट का होना था, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. इफ यू नो दैट एशियन कप 2027 कौन से स्पोर्ट के लिए होने वाला है, देन आई थिंक इट वुड बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड हियर गाइज द राइट आंसर इज फुटबॉल.
So we all know that FIFA is going on, so football is in the news, and that's why there was also news on the AFC फुटबॉल एशियन कप 2027 जिसके लिए इंडिया ने विड्रॉ किया है अपने बिड को, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फुटबॉल. नाउ गाइस वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन, एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन president of the Table Tennis Federation of India. See guys, a very important development here. पहली woman ये बनी है, पहली woman president of Table Tennis Federation of India. So what is the name of that particular person? See, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, but this is the last question of our today's session and you are required to tell me that what is your right answer. And then I am also having a homework question for all of it that is once again a very important and on the similar lines. So guys, यहाँ पर हम बात करें right answer की. The right answer is Meghna Elhawat, as she has basically made the history by becoming the first woman president of the Table Tennis Federation of India. इसी तरीके से इंडिया के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ Indian Olympic Association? Do tell me the right answer in the comment section. And guys, that was all from the today's session, and now this is the time that you are going to tell me your scores out of 50 in this top 50 MCQ session part 1 December 2022. So guys, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us, and you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of these sessions, and the link to the Telegram channel is already given in the description below. So guys, that was all from the today's session. If you have any queries, you can always share your queries in the comment section, and apart from that, you can also share your queries on the hello@edutap.co.in, and you can also call us at 814-620-7241. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.